everyone, welcome to Corporate Law Journal channel. It brings me immense pleasure to bring to you a brand new, very informative web series on Negotiable Instruments Act 1881. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वेब सीरीज में इस एक्ट के बारे में सब पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट सेक्शंस अंडर द एक्ट, डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, व्हाट इज अ चेक, व्हाट आर अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इश्यूज क्या होते हैं इस एक्ट के अंदर, एंड वी विल डू दिस थ्रू द सेक्शंस एंड थ्रू केस लॉज। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है क्या। इट इज द एक्ट व्हिच गवर्न्स द यूसेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन द कंट्री। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड checks, promissory notes, bills of exchanges, etc. Basically, tools with which you complete transactions. And this act provides a very uniform legal framework across the country. It is important to understand the act and the case laws so that in the future, negotiable instruments can be used in a regulatory compliant manner that ensures the transfer of negotiable instruments is simple and efficient, making them an essential tool for business transactions. तो हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि companies and MSMEs use negotiable instruments to a very large extent. The Act has undergone multiple amendments in order to stay updated with the changing times and to remove all the loopholes. हम इस वेब सीरीज में with further episodes इन amendments को भी बहुत in depth पढ़ेंगे। हम इस टीजर में आपको ये भी बताएंगे कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एपिसोड नंबर 1 में वी विल टॉक अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इस एक्ट का स्कोप, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिडिटी ऑफ अ चेक, एटसेट्रा। एपिसोड 2 वी विल delve into recent amendments and their importance. एपिसोड 4 what constitutes a valid notice, ये बहुत इंपॉर्टेंट है for businesses and MSMEs to know. Episode 5, we will talk about Section 148 of the Negotiable Instruments Act, which is also a very important section. Episode 8 will talk about Section 139. Episode 7 will talk about Section 118 of the Negotiable Instruments Act. For example, Episode 14, we will talk about closure of account cases. Episode 15 में हम बात करेंगे about successive defaults and consecutive notices. In episode 16, we will talk about companies and partnerships and HUFs under the Negotiable Instruments Act. And 23, 24, 25 episodes में हम criminal procedure codes relate करेंगे Negotiable Instruments Act को. We will talk about section 256 of CRPC. We will talk about recovery of fine and compensation and amendment in complaints and material alteration of check. ये सब बहुत important factors in Negotiable Instruments Act के, which is important for people to know. हम इस बहुत नई, बहुत एक्साइटिंग एंड बहुत इंफॉर्मेटिव वेब सीरीज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के हर प्रोविजन को कवर करेंगे with more than 20 episodes coming up. Thank you for watching this teaser and please stay tuned to Corporate Law Journal channel. Don't forget to like, comment your thoughts and subscribe. Thank you.